So, hello everyone. In the last class, we have completed with the receivers. Now we are moving on to digital communication. So, regarding the numerical questions on the previous class, we will take it separately in some other video. Okay. Let us first start with the digital communication. So, in the digital communication, we will be going to cover like with the first of all, what we'll be going to cover is about sampling theorem, then the PCM, and then we will going to cover the different modulation scheme schemes. Okay, so let's start. See, what is, suppose this is a like the continuous signal MT that we have been saying from the last 2 3 lectures. So this is a continuous signal, and to convert this into the digital signal, if I focus on a very small portion, say this portion, which is between like T naught and like, let this be T naught plus some interval T. So this could be like this, where this is T naught and this is T naught plus T. So here, so here we have seen that for like for some time interval, let's say T dash, the amplitude is almost constant and does not change. If the that is the amplitude is constant and it does not change, so that means that even though if we just take this portion and we are not worried about this portion, then we can say that for time interval T naught, suppose this is T1, time interval T naught plus T1, we are taking one instantaneous sample, which is this sample, and then if we send another sample at time T naught plus T dash, which is at this instant, then we can say that from time interval T naught plus T1 till time interval T naught plus T dash, we can assume that the amplitude is nothing but same as the sampled value sent at the time interval T naught plus T1, which is nothing but this value. Okay. Similarly, when this is sent, this sampled value is sent, and another sampled value is sent at time interval. Suppose this is the next value which is sampled. So we can say that between these two time interval T dash, that is the T dash, the value of the signal is this value. Suppose this is A1. So the value of the sample is A1. So while reconstruction of this signal, how it will be reconstructed when it will pass with the low pass filter, it will assume that point T1, from point T1, that is T naught plus T1, from this point interval when one sample was sent, if this values is AM, A1, so this point and up to the next sample which is sent, like it was sent after T dash time. So you add T naught plus T1 plus T dash. Up to that time, the amplitude is constant as A1 only, like A1 only. Similarly, for the next sample, A2, it will assume that the up to the next sample is achieved or received, the amplitude will be A2. So accordingly, this sample can be reconstructed. Okay, this signal can be reconstructed. Even though if we do not send the entire signal, if we only send some samples, the signal could be reconstructed. Okay. Now, how many samples is to be taken and how many sample is to be taken, how we will know?
Here we have manually seen, like for an example, we have seen that one sample is this one, another sample is this one, because between these two samples, we can assume that the amplitude is constant, it is not changing, or even if it's changing, it is like almost negligible. So for all the signals, we cannot do like that. So there is a which state that sampling theorem which state that after what time interval you should take the sample after what time interval you should take the sample so that the original message will be reconstructed back from the sample. Okay. So if the sample is having the bandwidth of that message signal is having the bandwidth of FM, so the sampling rate should be greater than twice of FM. This is the sampling theorem. That is, Fs should be greater than equal to twice of Fm, and this is also known as the Nyquist rate. अब यहां से आप टाइम पीरियड में निकाल ही सकते हो, 1/ts कर दो, सैम्पलिंग टाइम इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2/fm को लिख दो आप tm, ठीक है। और 1/t is equal to frequency, 1/t is equal to nothing but frequency. From here you will get that ts should be less than equal to 2/tm, sorry, tm/2, or ts, that is sampling time, should be less than 0.5 tm. सो आपको यहाँ पर अब यू गेट व्हाट इज द सैम्पलिंग टाइम, कि आपको किस टाइम इंटरवल में सैम्पलिंग करना है. तो बेसिक थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड एंड रिमेंबर दिस, दैट द सैम्पलिंग अकॉर्डिंग टू द सैम्पलिंग थ्योरम, this is the sampling rate, also known as the Nyquist rate, and if we sample the continuous signal at this rate, we will get what? We will get the sufficient number of samples through which we can construct back the original signal. So how you will convert that? How you will, this is the continuous signal, how you will going to get back, means convert this into the samples. You have to take samples. Basically, this would be the samples that we are talking about. So suppose if this is empty, you have to do nothing but just multiply empty with a pulse train. Pulse train, like suppose summation n equal to 0, say infinity. This is what? This is nothing but delta. If this is 0 and this is t, the delta of suppose t1, delta of t minus t1. This is if 2t1, so this is nothing but delta of t minus 2t1. So similarly, this could be like delta of t minus n ts, where ts is what? This t1 should be what? This t1 should be the sampling time, after which you have to take the sample. So this is one sampling time, this is two sampling time, therefore n ts. Now, if we assume that the signal is also present before the reference point, that is, we are taking into the negative time, then we have to take all these positive and negative values as well. So mt can be written as mt equal to summation n is equal to minus infinity up to plus infinity delta of t minus n ts. By this, you can convert the signal from analog or a continuous time domain to the discrete time domain or digital form. So this ts is nothing but the sampling time. Sampling time, or we have the relation fs greater than equal to twice of fm. From here, you can get ts. Ts is 1/fs. Okay. Now, just remember 2-3 points. For example number 1, if I say the signal is given as like 5 cos 100 into 10 raised to the power 3t, what would be the sampling rate on the Nyquist rate? That would be like f. What is f? 100 pi. Suppose this is 100 pi. So we have the standard form is what? Cos 2 pi f ct or fmt, whatever you want. Simple, right? Ft. So if you represent this 100 pi into 10 raised to the power 3 is equal to 2 pi f. ठीक है, t को तो हमने हटा दिया, तो what we will get? This 2 ones are 2 and this is the 50.
So f is nothing but what? 50 kilohertz. So what would be the sampling rate? This is nothing but twice of fs, that is 100 kilohertz. This is one of the example. Okay. So now please remember this important point. Whenever there are multiple signals and all these signals are added, so if there is addition, so the maximum frequency signal is to be taken into consideration for sampling rate decision. If there is multiplication, if there is a multiplication of two signals, for example, I'll give you example, wait. So there could, then the resultant would be the addition of sampling rate. Now, if there is a convolution, if there is a convolution, then there would be like the minimum frequency has to be taken into consideration. So what I mean by this, let us take some examples. For example, I say that, like for example, in addition, if we have cos of 4000 pi t plus sine of 6000 pi t, what would be the sampling rate of this frequency, of this message signal st? You simply see there is 4000 pi t and there is 6000 pi t, which is the maximum, 6000 pi t. The sampling rate will be decided according to this. According to this. Getting the point? Now, suppose for multiplication we are having, okay, now let us also have one more example about this sync. What is like the sampling frequency of this signal sync 100t? If sync 100, we are talking about sync 100t, that means what is sync of t? Sync of t is nothing but sine pi t upon pi t. So what would be sine of, sorry, sync of 100t? Sync of 100t will be nothing but sine of 100 pi t upon pi t. Okay. Now this pi t is what? This is pi t is the amplitude. You can write this 1 upon pi t into sine of 100 pi t. Now this can be taken as the actual signal, and from here you can easily deduce that the sample rate is nothing but 100 samples per second. Okay. Now come to the multiplication part. Like suppose if I have like sync, so sync t mein sync 100t, the sampling rate comes to be 100 sample. Huh? This is the 100 sample. If we have sync, like sync square 100t, sync square 100t. So this can be written as sync, this is sync, okay? Sync 100t multiplied by sync 100t. So we say that in multiplication, addition of sampling rate will be done. So here what we have, this would be 100 sample per second, 100 sample per second, the total will be 200 sample per second. Similarly, if there would be a cube, it would be 300 sample per second. If power 5, 500 sample per second. Given that the original signal का sample जो है वो 100 sample per second है. अगर ये 200t होता तो 200 से multiply करते, 200 into 3, 200 into 5, like that. Okay. Now what about convolution? और या मान लो एक का 100 होता, दूसरा का 200 होता, तो obviously 300 sample per second का sampling rate होता. ठीक है. What about the convolution? If we have like sync 400t convolve with sync 600t, what would be the sampling rate of this signal? ST is this. So we have already seen that for sync signal, if we have sync 100t, the sampling rates comes out to be 100 sample per second. So we can easily say that this is the 400 sample per second is the sampling rate. Here 600 sample per second is the sampling rate. So what would be the sampling rate of this combination? In convolution, we have to take the minimum one. So minimum is 400. So for entire signal should be sampled at 400 samples per second.
I hope this is clear. If this is clear, so now let's move to the next part. Now suppose, okay, so there now we are talking here, we have seen that there is a single frequency existing. There could be a range of frequency, okay. Range of frequency could also be there. So remember, whenever there is a range of frequency, that means there would be a higher frequency component that is ranging from F1, say F3. So F3 would be the higher frequency, F1 would be the lower frequency. So you, in the range of frequency of a signal is given, then you have the higher frequency, you have the lower frequency. From here you can find the bandwidth. Bandwidth is nothing but fH minus fL. And once you find the bandwidth, then sampling rate will be nothing but greater than equal to twice of the bandwidth. Okay, for range of frequency, sampling rate will be like this. Done? Okay. Now we have understood that how we can create the samples and at what interval the sample should be created so that it can easily be reconstructed. So let us now see what further can be done. This was my empty signal. We converted this to the samples, just like we have above seen that how samples can be achieved. This is the samples. Now, see, each sample, now there could be like, I don't know how many samples depend upon like, there could be infinite number of samples, okay. There could be infinite number of samples that you can take. So suppose we limit this to like say 20 samples. We have 20 samples. Now each sample has to be represented with the unique code. Now you are sending this, like suppose this is sample 1, this is sample 20, sample number 20. You have sent sample number 1, you are sending sample number 2, and we have assumption is that each samples are unique. Each samples are unique. Okay. So at least you are having the 20 number of unique codes is required for sending this. Why? Suppose you are sending sample number 1, how would receiver differentiate it with sample number 2? How? How? First of all, let us understand how you send this sample. Okay, then we will come to this next part. Okay, this is now one sample. You represent it by any code. What code we will come to it a later part. Now there are two options. Once, what you can do, you can send that sample directly through the wire as in the form of telephone. And the technique that we use is known as the pulse code modulation. We will see what is pulse code modulation. Another is what? You can send it through the free space, as in case of mobile communication. So when you send into the free space, now again, there will come modulation to avoid interference that we have seen in the previous videos. If we can send it, number one, we can send it directly through the wire. If we send it through the wire, it is okay. Like in the phone of telecommunication, we can directly send each code we can send through the wire. Code means what? There could be like 0110, like this type of code. So this type of code means what? You have to send a signal with low voltage for 0 and for high voltage for 1. This is sent continuously on the wire, and there is a sensor on the wire which will detect the change in the variation in the voltage and can generate the code respective to the changes in the voltage level. So accordingly, you can send the voltage on the wire. But also now you cannot send it. All types of communication is not possible through the wires. So you have to use the free space for transmission of the signal. If you are using free space for the transmission of signal, interference could occur. For that, what you have to do? You have to do the modulation. So there could be different types of modulation technique, ASK, PSK, FSK, that we will see in the coming classes. Okay. So you send this through the modulation. Both things is clear. Now at the receiver end, when these are received, they should be able to differentiate. Okay. Now let us come to the point. Suppose these are the 20 signals that we are sending. What I was saying that each signal has to be represented with the unique code. Suppose we are having 20 signals. So how much bit is required to represent one signal? Understand this clearly. Okay. If there are two signals, we can send it one as 0, we can represent one other as 1. If we are having three signals, then obviously we will requiring 2 bits to represent these three signals. 0, 0, 0, 1, 1, 0. Okay, at least 2 bits are required. So for 20 unique signals,
How many bits we are required to represent this? We required log base 220. Okay, like for n bits, how many different combination is possible? 2 raised to the power n. So like for n possible n bits, we have 2 raised to the power n possible combinations. Possible combinations. So we have how many possible combination we required? We require 20. 20 possible combination is required. So from here, if you take log both side, what you will get? N log base 2 is equal to log base 2 possible combination. Let us write P. So total number of possible combination if P. So from here log base 2 this is 1. So how many bits you required is nothing but log base 2 of total number of combination that you want, unique combination that you want. That is what I have written here. Here I have 120 combination. So log base 2. Now there is a device. There is a device which can convert which can represent each symbols with these codes, and this is called as the encoder. This is called as encoder. What encoder will do? The encoder will basically you have to take how many bit of encoder? Log base 220. Log base 220 round off to an integer. Such n bits of encoder will you have to take, and it will generate so many unique combinations of code 0001 0010 like this. All these codes will be generated by the encoder. Now each unique code you assign it to the unique sample and send it. So the receiver would now exactly know which code represent which sample. You getting the point? But there is a problem. What is the problem? See, here we have limited ourselves to just 20 signals, 20 samples. But practically there could be the infinite number of samples. Why is there infinite number of samples? Because this message signals is like in frequency domain. If you see, it is like unlimited message signal. It will have large number of frequency. The first thing is to limit that message signal to the required frequencies. You pass it through the LPF, low pass filter. The low pass filter is designed, and the bandwidth or the cutoff frequency of low pass filter is the cutoff frequency of the message signal FM. So after you pass the empty with the low pass filter, now you have the band limited empty. You are having band limited empty, which has only having frequency up to its bandwidth, that is FM. Okay. So this low pass filter in digital communication is known as what? Anti-aliasing filter. Anti-aliasing filter. What it does? It band limit the message signal. Obviously, now since message signal is band limited to its bandwidth FM, its sample will be also band limited. So now we don't have the infinite number of samples, we have some finite number of samples. Now does this solve our problem? Still no. Why? Sir, okay, there is finite number of samples, but these samples are extremely very large. For example, for a message signal of 5 kilohertz, how many samples we have to take? Minimum we have to take 10 kilohertz. Sampling rate should be 10 kilohertz, or we can say that 10,000 samples per second. So first of all, there are two problems in it. Number one, the samples are very, very large, and there could be some duplicacy. Like suppose if this is the message bandwidth, this sample and these samples, it will exactly correspond to the same amplitude. There is a possibility. So one, there is duplicacy. Another, there is very large number of samples. So if there are large number of samples and each samples has to be given a unique code, so encoder that is required also very, very large number of n. That will have other problems as well. What could be the other problem? First of all, design is very complex. Like if n is very, very large, you have to invest huge resource. So design is very complex. Second, you in the later on we will see that if n is very, very large, so much large bandwidth is required. Why? See, suppose if we have like only n is equal to 2 and one, suppose there are two signals which is sent,
For n is equal to 2, we can at least send 4 signals, 0 0 0 1 1 0 1 1. But just for simplicity, suppose 0 0 is sent. So it is nothing but if each bit is represented for time period TB, so only this much of bit is required to be sent, like 2 TB is used. If there are large number of n, so this signal will further spread in time domain to much extent, like 2 bit. Like suppose, okay, before that, let us understand what is TB. I have said that each sample is represented like with a unique code. Let us assume that there are only 2 samples. So only we can send it by 2 unique code, 0 or 1. So how you will send 0? You will send 0 by some signal. What would be the duration of that signal? Suppose you are sending 0 by 5 volt and you are sending 1 by 10 volt. So you will send a signal of 5 volt to represent that it is a signal, it is of 0, its amplitude is 0. Sorry, maybe this amplitude is A1, this amplitude is A2. So you will send a 5 volt voltage to send a sample whose amplitude is A1. So 5 volt, how much long? So that time duration is known as bit time, TB. Okay, that time duration is known as the TB. So you are sending TB for another time interval, you will be sending 10 volt, that is also TB. Okay, but if there are 2 signals, then only for one signal you will have to occupy 2 TB. For n number of signals, you will have to occupy n TB, and this will cause problem. Only one signal will be sent for so long period of time. It will keep the channel busy for the long period of time. So this will become more clear. Okay, so this n we cannot take it too high. There is a problem. First, infrastructure requirement is very high. Another, bandwidth requirement will be very high. Okay, for the timing we have understood this. Now if we have understood this, so obviously what is the, like, what would be the our goal? Our goal would be like, we have so many samples out of which there are some duplicate sample as well. Our goal is to, by any mean, we can reduce these so many samples to some finite, like some minimum number of samples, so that encoder can perform effectively and bandwidth can be utilized. Okay, so इसको हमको कन्वर्ट करना है कुछ मिनिमम नंबर ऑफ सैंपल्स में. वो काम करता है यहां पर व्हाट, क्वांटाइजर. क्वांटाइजर, ठीक है. क्वांटाइजर क्या करेगा? क्वांटाइजर विल, व्हाट इट विल डू, इट विल सी कि भाई मिनिमम वोल्टेज रेंज क्या है इस सिग्नल का. फॉर एग्जांपल, अगर ये एक कोई सिग्नल है हमारा एम टी, इसको हमने सैंपल में कन्वर्ट किया, तो ऑब्वियसली बात है कि मिनिमम जो है वो इसका -5 वोल्ट है और मैक्सिमम 5 वोल्ट है. यानी कि इसी रेंज के अंदर हमें सैंपल्स को रिप्रेजेंट करने हैं. ठीक है, तो इट विल ट्राई, what it will try. Now, one more point that is important and should be noted, that quantizer and encoder में 1 to 1 मैपिंग होती है. इनकोडर और क्वांटाइजर में 1 to 1 मैपिंग होती है. मतलब अगर हम n बिट का या 3 बिट का इनकोडर ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम 3 बिट का इनकोडर ले रहे हैं, मतलब इनकोडर के अंदर कितने यूनिक कोड्स होंगे? 2⁻3, दैट इज 8. ठीक है, अगर इनकोडर 3 बिट का है तो इसके अंदर कितने यूनिक कोड्स होंगे? 2⁻3, दैट इज 8. ओनली 8 यूनिक कोड्स. दैट मीन्स कि 8 यूनिक सैंपल्स को ही ये कोड्स कर सकते हैं. ठीक है, डिफरेंट 8 यूनिक सैंपल्स. सो अगर इनकोडर की कैपेबिलिटी है कि वो 8 यूनिक सैंपल्स को ही इनकोड कर सकता है, तो क्वांटाइजर मस्ट प्रोड्यूस ओनली 8 सैंपल्स, 8 यूनिक सैंपल्स और 8 डिफरेंट सैंपल्स. यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर क्वांटाइजर 8 से 9 सैंपल्स अगर प्रोड्यूस कर दिया, तो व्हाट विल बी द रिजल्ट? 9th सैंपल के लिए हमारे पास कोड नहीं है जिसको हम भेज सके, जिसको हम कोड करके भेज सके. यू आर गेटिंग द पॉइंट? सो क्वांटाइजर और इनकोडर के बीच में 1 to 1 कोडिंग होगी. अब क्वांटाइजर क्या करेगा? क्वांटाइजर क्या करेगा? इट विल हैव प्री डिफाइंड लेवल. इसके पास प्री डिफाइंड लेवल होगी और वो हर सैंपल्स को उस लेवल पे क्वांटाइज करेगा. ओके, हर सैंपल को उस लेवल पे क्वांटाइज करेगा.
फॉर एग्जाम्पल मान लो कि हमारा सैंपल्स है जिसमें 2.1 2.2 2.3 ऐसे करके हमारा सारा सैंपल्स है, 2.4 2.5 2.6। तो इसने क्वांटाइजर ने लेवल बनाई है 0 वोल्ट 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट 4 वोल्ट 5 वोल्ट। तो ये 2.1 2.2 2.3 2.5 इसको मिडिल वैल्यू पे क्वांटाइज करेगा। 1 से 2 को क्वांटाइज करेगा, 1 और 2 के बीच का मिडिल वैल्यू 1.5 है। तो जैसे ये 2.1 हो गया और 2 और 3 के बीच का मिडिल वैल्यू कितना है 2.5। तो जैसे ही ये 2.1 हो गया 2.2 हो गया, इन सबका वो क्या करेगा, अज्यूम करेगा कि ये 2.5 है। यानी कि जो भी सैंपल्स 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 पे थे, इन 1 2 3 4 5 सैंपल्स के लिए इट विल जनरेट ओनली वन यूनिक सैंपल दैट इज 2.5 एट 2.5। ओके, और 2.6 वाले को इट विल मूव इट टू 3। तो अगर ये 6 डिफरेंट सैंपल्स है फॉर एग्जांपल्स के लिए, तो इनके लिए हमारा क्वांटाइजर कितने सैंपल्स जनरेट कर रहा है, ओनली 2। For all 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 and 2.5, it is generating only one unique sample that is 2.5. And for 2.6, it is generating another unique sample that is 3. So it has reduced the number of like samples that is uniquely generated. Okay. So now let us understand what is quantizer and how it is work. So now we have just understood that total different levels, total samples that is the quantizer will have is nothing but 2 raised to the power n, where n is the number of n bit encoder। अगर इनकोडर n बिट्स में इनकोड कर रहे हैं तो उतना ही लेवल प्रोड्यूस होगा ना। जहां पर हमने देखा था कि अगर इनकोडर के पास 3 बिट्स हैं तो ये 8 डिफरेंट सैंपल्स मतलब को इनकोड कर सकता है, तो क्वांटाइजर भी 8 यूनिक सैंपल जनरेट करेगा। तो टोटल सैंपल्स जो क्वांटाइजर जनरेट करेगा वो कितना होगा, 2 raised to the power n। सो इसको हम बोलते हैं लेवल। लेवल विल बी 2 raised to the power n लेवल्स ये क्रिएट करेगा, है ना। 8 है तो 2 raised to the power 3, 8, 0 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8। क्वांटाइज्ड वैल्यू क्यू भी क्या होगी, स्टेप साइज देखो सबसे, उससे पहले स्टेप साइज देखो। व्हाट इज द स्टेप साइज, स्टेप साइज क्या है, स्टेप साइज हमारा होगा वी पीक टू पीक। हमें ऐसे लेवल्स को डिसाइड करनी है जहां के मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज है, उसको हमको इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। फॉर एग्जांपल ये 5 वोल्ट है, ये -5 वोल्ट है, तो 5 से 5 वोल्ट का रेंज को हमको इक्वल लेवल्स में डिवाइड कर देना है। तो हमारे पास लेवल कितने, 2 raised to the power n, और रेंज क्या है, वी पीक टू पीक। हेयर इन केस 10 है, 10 वोल्ट। तो इस पूरे वी पीक टू पीक को हम टोटल इक्वल लेवल्स में डिवाइड करेंगे 2 raised to the power n, तो ये हमारा स्टेप साइज निकल के आएगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं डेल्टा। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एंड हैज टू बी रिमेंबर्ड। So this is another important formula that has to be remembered, which is this one. Step size, delta step size is V peak to peak upon 2 raised to the power n, where 2 raised to the power n is total number of levels. Okay. So now you see that if suppose the sampled value in the above case, you see sampled value was like 2.1. So what was the quantized value? 2.5. So how much error is there? The error is nothing but the sampled value minus quantized value. There is error now. Actual was 2.1, but we are like we have limitations, so we are like quantizing it to 2.5. But in this quantization process, there is an error. How much error is there? There is error of 0.4 negative. Okay, so the difference of the sampled value minus quantized value is called quantization error QE. This is also important, just remember it. Quantized value QE, and this QE की maximum value क्या होगी, plus minus delta by 2. This is also important. So friends, यहाँ पर हमने देखा कि लेवल कितना होगा, 2 raised to the power n। कैसे आया, we have seen that step size v peak to peak upon 2 raised to the power n, quantization error sampled value minus quantized value, and maximum it can be plus minus delta by 2.
Okay, done. So what is the our system till now? What we have done? We are taking an empty, we are passing it with a low pass filter first, then we are sampling it using a sampler, and then the sampler is basically quantized to find the unique samples, and that to limited number of samples. Then it is encoded, and then after encoded it is transmitted either directly through wired or through free space, whatever is the medium. Okay, now remember, encoder is reversible. This process is reversible. Obviously, if this process is not reversible, how you can decode back the signal? So this is reversible. You can use a decoder to get back the signals. But quantization is not reversible. Once you quantize, it cannot be recovered back. Not reversible. If this is not reversible, then what is it is meant? It is meant that ki you have to be very careful in quantizing and ensure that quantization error is not high. Because एक बार signal quantize हो गया, original signal cannot be recovered. It is irreversible or not reversible, and quantization error therefore has to be keep under control. अब देखो यहाँ पर जैसे मान लो चलो इससे पहले थोड़ा सा और मैं आपको एक चीज और एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये मेरा सैंपल था जो पहले मैंने टीएस पे लिया, फिर हमने 2 टीएस पे लिया, फिर हमने 3 टीएस पे लिया। ये हम 3 सैंपल्स ले रहे हैं और पहला सैंपल को हमने मान लो 3 बिट्स पे इनकोड कर दिया, लेट से 0 0 1। तो दिस वुड बी लाइक 3 बिट्स का ड्यूरेशन हमने अभी बात किया टीबी होता है, तो दिस इज 0 0 और दिस इज 1। ये एक होगा, ऐसा सिग्नल होगा 0, दिस इज 0, दिस इज 1। और ये कैसा होगा? ये 5 वोल्ट होगा या 0 वोल्ट होगा, या 0 को हम 5 वोल्ट पे दिखाएंगे या 1 को 10 वोल्ट पे दिखाएंगे, या हम इस सिग्नल को ऐसे भी दिखा सकते हैं कि भाई 0 को हम 0 ही दिखाएंगे और 1 को हम एक हायर वोल्ट पे दिखाएंगे, लाइक दिस ऑल्सो। दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। ऐसा भी आप कर सकते हैं कि भाई हम नेगेटिव वोल्टेज से दिखा सकते हैं पॉजिटिव वोल्टेज से। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिग्नलिंग इज देयर, एंड इसको हम बोलते हैं सिग्नलिंग स्कीम। तो ये डिपेंड करेगा कि हम कौन सा सिग्नलिंग स्कीम यूज कर रहे हैं, आरजेड यूज कर रहे हैं, आरजेड यूज कर रहे हैं, है ना। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिग्नलिंग स्कीम्स हैं जो हम बाद में देखेंगे। अभी फिलहाल ये समझ लो। तो इसमें बेसिकली 3 है। तो कितना ये टोटल टाइमिंग कितना हो गया इसका? 3 टीबी। तो मतलब कि जब इसके पास दूसरा सैंपल आ रहा है अनदर, वो किस में आएगा? सेकंड टीएस में। मतलब टाइम इंटरवल तो टीएस ही होगा। एक टीएस पे हमने एक सैंपल लिया, उसके बाद अगले टीएस पे एक सैंपल लिया। तो मतलब कि टीएस टाइम इंटरवल में इसको तीनों बिट्स को सेंड कर देने हैं। तो 3 टीबी मस्ट बी इक्वल टू टीएस। एनी कंफ्यूजन इन दैट? भाई आपका जो सैम्पलिंग टाइम है जिसके बाद आप दूसरा सैंपल मुझे भेजोगे, उससे पहले पहले हमें ये तीनों बिट्स को भेज देना होगा। तो टीएस मस्ट बी इक्वल टू 3 टीबी। तो इसी को अगर हम करें एन बिट्स के लिए, तो टीएस विल बी इक्वल टू व्हाट? एन टीबी। और 1/TB इज नथिंग बट आरबी bit rate, and 1/TS is nothing but fs sampling rate. So we can write rb is equal to nfs, and this rb is also known as the bandwidth. देखो पिछले थोड़ा सा पहले हमने लॉजिकली समझा था यहाँ पर, है ना। लॉजिकली हमने यहाँ पर समझा था इस केस में कि भाई क्यों हमें एन को कम चाहिए होता है, क्योंकि चैनल को बिजी रखता है, वो बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट बहुत हाई हो जाती है। वो यहाँ से हमें न्यूमेरिकली भी दिख रहा है कि आरबी जो बैंडविड्थ है इज नथिंग बट बैंडविड्थ इज इक्वल टू एन एफ एस। तो अगर एन की वैल्यू बहुत ज्यादा हाई होगी तो बैंडविड्थ हमारा बहुत हाई होगा, देयरफॉर हमको बैंडविड्थ को कम रखना है। ठीक है, ये एक चीज डन हो गया। अभी देखो इसमें एक और चीज है जो अभी फिलहाल आपको यहाँ पर मतलब नहीं आप समझ पाओगे, लेकिन मैं बता देता हूँ क्योंकि ये आपको एसके पीएसके में यूज होगा। एक होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर। लॉजिकली इसको समझो कि आप जितना ज्यादा बिट भेजोगे, जितना ज्यादा बिट भेजोगे, जैसे आपने 2 बिट भेजा, तो ऑब्वियसली बात है कि दोनों के बीच की स्पेसिंग ज्यादा होगी। अगर आप ज्यादा बिट भेजोगे उसी टीएस के अंदर, है ना, मान लो कि एक सैम्पलिंग के अंदर आप 2 बिट भेज रहे हो, तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर दोनों बिट के बीच में स्पेसिंग ज्यादा होगी। अगर उसी सैम्पलिंग टाइम के अंदर आप 4 टीबी भेज रहे हो,
तो ऑब्वियस सी बात है कि ये दोनों सट जाएंगे। जितना ज्यादा आप n बढ़ाओगे उतने क्लोज क्लोज ये बिट होने जाएंगे। तो जितने क्लोजर वो बिट होंगे उतना ज्यादा प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर बढ़ेगा। ठीक है। तो यहीं पर आप लिख लो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर इज ऑल्सो डायरेक्टली रिलेटेड टू n। तो जितना ज्यादा n होगा उतना ज्यादा प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर बढ़ेगा। दिस टू आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट, जस्ट नोट इट डाउन। करेक्ट। So we have understood what is the bandwidth in PCM. We have seen what is the quantization error. We have seen this and probability of error. Okay. Now, before we move on to channel quantization में ही मैं आपको बता देता हूँ there are two types of quantizer. Quantizer, ठीक है। देखो ये जो वैल्यूज होती हैं जहां पर हम ऐसे बात करते हैं दिस लाइक दिस, है ना, जहां मान लो ये एक लेवल है, मान लो 0 वोल्ट है, ये 1 वोल्ट है, फिर ये 2 वोल्ट है, इस तरीके से जो, और ये हमारा डिफरेंट सैंपल्स हैं। तो इसको हम बोलते हैं राइज। दिस इज नोन एज राइज। और इसको बोलते हैं ट्रेड। ठीक है। तो अगर ओरिजिन जो आपका राइस पे पड़ेगा, अगर ओरिजिन आपका राइस पे पड़ेगा तो उसको हम बोलेंगे मिड राइस। इफ दिस टर्म दिस इज कमिंग टू द ओरिजिन, सो उसको हम बोलेंगे मिड राइस क्वांटाइजर। तो जनरली जो क्वांटाइजर की बात करते हैं वो मिड राइस क्वांटाइजर होती है, जहां हमने देखा लेवल इज 2 raised to the power n। ठीक है। और यहां पर देखो मिड राइस क्वांटाइजर में जीरो हमारा नहीं आ रहा कहीं पर भी, है ना, जीरो इंक्लूड नहीं हो रहा। और मिड ट्रेड मतलब अगर ये वाला पोर्शन आपका ओरिजिन पे लाई करता है, तो अगर ये वाला ओरिजिन पे लाई करेगा इस टाइप से, है ना, इस केस में ऐसे था, अगर इस केस में राइज करेगा तो उसको बोलेंगे मिड ट्रेड। तो दूसरा हो गया, पहला हो गया मिड राइज, दूसरा हो गया मिड ट्रेड क्वांटाइजर। और मिड ट्रेड क्वांटाइजर के लिए टोटल नंबर ऑफ लेवल 2 raised to the power n-1, ये भी आपको याद रखना है ना। अब जैसे आपको एल याद रखना है, जैसे टोटल नंबर ऑफ लेवल पता चला गया आपको, तो आपको डेल्टा निकालने में यही काम आएगा ना, टोटल नंबर ऑफ लेवल से आप डिवाइड करते हैं, वी पीक टू पीक को आप डिवाइड करते हैं बाई टोटल नंबर ऑफ लेवल से, 2 raised to the power n। अगर क्वेश्चन में है कि मिड ट्रेड क्वांटाइजर है तो आपको 2 raised to the power n-1 से आपको करना पड़ेगा। देयर विल बी वन लेवल वन, यहाँ -1 नहीं, यहाँ -1 है, ठीक है। 2 raised to the power n-1 से डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, दिस थिंग दैट यू हैव टू कीप इन टू माइंड, 2 raised to the power n-1। Okay. So if this is done, we are done with the quantizer, we have done with the sampler, we have done with the LPF quantizer and encoder. So now let us move towards the channel। ठीक है, चैनल में मूव करते हैं। तो देखो चैनल, अगर आप पीसीएम, बेसिकली हम ये पीसीएम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर हम वायरलेस तो पढ़ेंगे नहीं, वायर्ड वाला पढ़ेंगे। आपने टेलीफोन वायर के थ्रू आपने इसको, जो भी आपके सैंपल्स आए हैं, जो भी आपके सैंपल्स आए हैं आपने इसको इसके थ्रू भेज दिया। ठीक है। अब आप सैंपल्स को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? यू आर रिप्रेजेंटिंग सैंपल्स एज द रेक्टेंगुलर पल्सेस, आइदर 1 आइदर 0, दिस लाइक दिस। एंड इन फ्रीक्वेंसी डोमेन इसका क्या होगा? फ्रीक्वेंसी डोमेन में ये सिंक पल्स होंगे जो कि अनलिमिटेड बैंडविड्थ होगी, जो हमने प्रीवियस क्लासेस में देखा। तो चैनल की बैंडविड्थ तो लिमिटेड होगी। तो ये चैनल क्या करेगा? ऑब्वियसली इनको क्या करेगा? कॉम्प्रेस करने की कोशिश करेगा सिग्नल को, क्योंकि ये इनफाइनाइट बैंडविड्थ में भेज नहीं सकता, तो ये कॉम्प्रेस करेगा। जब चैनल कॉम्प्रेस करेगा फ्रीक्वेंसी डोमेन में, तो टाइम डोमेन में क्या होगा? सिग्नल्स में हम पढ़ेंगे कि फ्रीक्वेंसी डोमेन में अगर कंप्रेशन होता है तो टाइम डोमेन में उसका एक्सपेंशन होता है। तो ये जो सिग्नल है ये बेसिकली एक्सपैंड करेगा ऐसे। और ये अपने दूसरे वाले, ये वाला सिग्नल जो है ये ऐसा एक्सपैंड कर जाएगा, और ये वाला जो है वो ऐसा एक्सपैंड कर जाएगा, और फिर ये वाला सिग्नल ऐसा एक्सपैंड कर देगा। तो ये एक दूसरे के अंदर इंटरफेयर करेगा, इसी को बोलते हैं इंटर सिंबल इंटरफेरेंस। ठीक है, इंटर सिंबल इंटरफेरेंस। अब इसको अवॉइड कैसे करेंगे? तो सिंपल है, जैसे हमने वहां पर बताया था कि भाई रेक्टेंगुलर पल्स को ना यूज करके हम क्या करेंगे? सिंक पल्स को यूज करेंगे। सिंक पल्स को यूज करेंगे। तो अगर हम सिंक पल्स को यूज करेंगे तो हमारा इंटर सिंबल इंटरफेरेंस को हम मिनिमाइज कर सकते हैं। तो जहां पर हमने बैंडविड्थ पढ़ी थी कि बैंडविड्थ इज इक्वल टू एन आर बी, सॉरी एन एफ एस, आर बी इज इक्वल टू बैंडविड्थ इज इक्वल टू एन एफ एस। इसी को बिट रेट भी बोलते हैं और बैंडविड्थ भी बोलते हैं। ठीक है। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो डिफरेंस समझेंगे कि बिट रेट और बैंडविड्थ में क्या फर्क होता है। ऑलमोस्ट 90% ऑफ द टाइम बिट रेट और बैंडविड्थ सेम ही हम बोलते हैं, है ना। क्योंकि बैंडविड्थ, देखो चैनल की बैंडविड्थ तो ऑब्वियस सी बात है कि आप जितना मिनिमम रखोगे आपको उतना ही ज्यादा बेनिफिट है ना।
बेनिफिट इन द सेंस कि रिसोर्स कम यूज करने पड़ेंगे। वैसे तो आप चाहो तो इन्फिनाइट रखो, जितना ज्यादा आपका, अगर आप देखोगे कि जितना ज्यादा चैनल का बैंडविड्थ है उतना इफिशिएंटली इफेक्टिवली आप ज्यादा से ज्यादा स्पीड पे मैसेज को भेज सकते हो, दैट इज अ डिफरेंट एडवांटेज ऑन इट। बट रिसोर्स इज ऑल्सो लिमिटेड, सो आप कोशिश करते हो कि हम सफिशिएंट बैंडविड्थ चैनल को दें। तो एटलीस्ट यू हैव टू, व्हाट इज द मिनिमम, वी ऑलवेज टॉक अबाउट द मिनिमम, व्हाट मिनिमम बैंडविड्थ दैट हैज टू बी अलाउड इज नथिंग बट द बिट रेट आरबी। सो इसी को हम इक्विवेलेंट टू बैंडविड्थ कहते हैं, ठीक है। So bandwidth is equal to NFS. This was the case when we were using the rectangular pulses. Now, if we use the sinc pulse or raised cosine pulse, then the bandwidth will be given as bandwidth is equal to like RB, where RB is nothing but NFS into 1 plus alpha upon 2. Just remember this. If we are not using the rectangular pulse, if we are using the raised cosine pulse, this is called bandwidth for the raised cosine pulse. Bandwidth for the rate cosine pulse is given by RB into 1 plus alpha by 2, where RB is nothing but NFS. What is alpha? Like suppose if alpha is equal to 1, so what would be the bandwidth? It would be again RB, that is equal to NFS. So at alpha is equal to 1, we can say that it is the rectangular pulse. If alpha equal to 0, if alpha is equal to 0, we say that it is sinc pulse. So if it is question in the question, it is given that we are using sinc pulse, you have to substitute alpha as 0. For that case, RB by 2 will be the bandwidth. If it is not given that alpha is equal to 0, then RB will be the bandwidth. Alpha is equal to 1 is given, RB is equal to bandwidth. For any other alpha, we have raised cosine pulse, and for that bandwidth is given by bandwidth is equal to RB into 1 plus alpha upon 2. Very important, and you have to remember all these concepts. Okay. So now you have understood the bandwidth of the channel. Now let us move to another problem of the channel, that is the noise. So now for simplicity, we assume that we are sending this pulse, rectangular pulse, where one is showing as 0, 1 or 0. This is, say, positive voltage is as indicating 1 and negative voltage is indicating 0. So if this is the case, what could channel do? Channel could do basically what? It can distort the amplitude again, distort the amplitude. So this could be like possible in the channel. So this here rectification is very simpler. इसको आप वापस से रीजनरेट कर सकते हो यूजिंग रीजनरेटिव रिपीटर्स। रीजनरेटिव रिपीटर्स को आप ये सिग्नल दोगे, इट विल अगेन जनरेट बैक द फ्रेश ओरिजिनल सिग्नल लाइक दिस। व्हाट डज इट डू? ये करता क्या है बेसिकली, मान लो कि आपका सिग्नल है 1, ये 1 को आपने रिप्रेजेंट किया था 5 वोल्ट से, और ने चैनल ने इसको डिस्टॉर्ट करके कर दिया है 3 वोल्ट। तो रीजनरेटिव रिपीटर्स क्या करेगा कि उसको पता होगा कि भाई 5 वोल्ट को 1 रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो एक थ्रेशोल्ड वैल्यू लेगा 2.5 वोल्ट सपोज कर लो, और वो बोलेगा कि जितने भी सिग्नल्स की वैल्यूज 2.5 वोल्ट से ऊपर होंगे उन सबको मैं 5 वोल्ट पे वापस से पुश कर दूंगा। तो यहाँ क्योंकि 3 वोल्ट है तो वो 5 वोल्ट के ऊपर पुश कर देगा, है ना। और सिमिलरली नेगेटिव के लिए भी एक लगा लेगा वो थ्रेशोल्ड वोल्टेज, और उसके आसपास के जो भी वोल्टेज होंगे उनको वो नेगेटिव 5 वोल्ट पे पुश कर देगा। तो ये रीजनरेट कर देगा, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली एक थ्रेशोल्ड कॉम्पेरेटर लगा होता है। कॉम्पेरेटर हम पढ़ेंगे जब डिजिटल सर्किट पढ़ेंगे, थ्रेशोल्ड कॉम्पेरेटर लगा होता है, और वो कंपेयर करके या पॉजिटिव 5 वोल्ट या नेगेटिव 5 वोल्ट पे पुश कर देता है। तो डिजिटल मतलब कम्युनिकेशंस में हमारे पास नॉइज का इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि हम रीजनरेटिव रिपीटर से उसको रीजनरेट कर सकते हैं, है ना। लेकिन अब हाँ, यहाँ पर भी ऑब्वियस सी बात है, लिमिटेशंस तो हैं इसके भी। अगर मान लो इसने इतना ज्यादा डिस्टॉर्ट कर दिया कि ये इसको 2 वोल्ट कर दिया, तब तो ये बेसिकली 2 वोल्ट के लिए जो भी डेफिनेशन होगी उसको 5 वोल्ट पे तो नहीं भेजेगा वो, क्योंकि इसने रखा है कि 3 वोल्ट से ऊपर जो भी होगा उसको हम 5 वोल्ट पे भेजेंगे, 3 वोल्ट से नीचे होगा उसको -5 वोल्ट पे भेजेंगे। अगर इस टाइप से डेफिनेशन होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि ये रीजनरेट करेगा, लेकिन वो सिग्नल गलत रीजनरेट करेगा। तो थ्रेशोल्ड कंपैरेटर या रीजनरेटिव रिपीटर्स की भी अपनी लिमिटेशंस है। लेकिन फॉर द टाइम बिंग हम ये अज्यूम करते हैं कि इतना ज्यादा डिस्टॉर्शन नहीं हो रहा है, इतना नॉइजी चैनल नहीं है, इट इज दैट कि थोड़ा बहुत डिस्टॉर्शन हो रहा है चैनल्स के अंदर, जिसकी वजह से ये काम करेगा। तो दिस इज वन ऑफ द टेक्निक दैट वी कैन यूज टू रिमूव द नॉइज। दूसरा हमने क्या बताया भाई, क्वांटाइजेशन एरर है। क्वांटाइजेशन एरर क्या था? क्वांटाइजेशन एरर का फॉर्मूला, क्वांटाइजेशन एरर का फॉर्मूला क्या था? अच्छा, एक इससे पहले हम समझ लेते हैं एक चीज, है ना।
ये देखो, हम तो बिट रेट बोलते हैं। बिट रेट क्या है? बिट रेट, बिट रेट क्या है भाई? बिट रेट आरबी है। जिस बिट्स पे वायर्ड, हम पीसीएम में क्या वायर्ड कम्युनिकेशन में यूज कर रहे हैं बेसिकली। तो पीसीएम में हम क्या करते हैं? बिट बाय बिट ट्रांसफर कर देते हैं, है ना। एक बिट को हम ट्रांसफर करते हैं, अगला बिट को ट्रांसफर करते हैं। फॉर एग्जांपल हम भेजते हैं 5 वोल्ट, उसके बाद फिर -5 वोल्ट, फिर -5 वोल्ट, फिर -5 वोल्ट, फिर +5 वोल्ट, 0101 ही तो ट्रांसमिट करना है। तो बिट बाय बिट ट्रांसमिशन होती है, इसलिए पीसीएम के अंदर वी ऑलवेज से कि बिट रेट इज इक्वल टू सिंबल रेट। बिट रेट इज इक्वल टू सिंबल रेट। बिट रेट इज इक्वल टू सिंबल रेट। सर सिंबल क्या है? ये नया टर्म आपने यूज कर लिया। हाँ, मैंने नया टर्म तो यूज किया है, सिंबल रेट। देखो सिंबल रेट बेसिकली क्या होता है? बिट रेट हमने समझ गया ना। बिट रेट हमने अभी देखा, सारा बिट्स की कहानी ऊपर चल गई। बिट रेट समझ गया। सिंबल रेट क्या होता है? देखो सिंपल बस ये समझो कि अभी तक हम क्या कर रहे थे कि भाई हमने एक सैंपल को एक सैंपल को 3 बिट्स में रिप्रेजेंट कर दिया, 0 0 1, और मैंने इन सारे बिट्स को वन बाय वन करके ट्रांसमिट कर दिया। लेकिन सिंबल्स में क्या है? अब ऐसे आप हर बिट को ट्रांसमिट करते जाओगे तो आपका क्या होगा कि भाई, एक तो आप कंटिन्यूअस ट्रांसमिशन कर रहे हो, प्लस आप जितना ज्यादा एन होगा उतना ज्यादा बिट्स को आप ट्रांसमिट कर रहे हो। तो इसका हम एडवांटेज आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी फिलहाल के लिए समझ लो कि सिंबल्स में हम क्या करते हैं कि सारे बिट्स को हम ट्रांसमिट नहीं कर देते हैं। हम बिट्स को सिंबल्स में कन्वर्ट करते हैं कि हम बोलते हैं कि भाई चलो आपके 2 बिट्स मुझे दे दो, 0 1, मैं उनका एक सिंबल बना दूंगा। फिर आप अगला सैंपल्स के आपका 0 1 1 आया, इसके और इसके एक एक बिट हमको दे दो। मैं 2 2 बिट का सैंपल्स बनाता रहूंगा, हर 2 2 बिट्स का एक सिंबल्स बनाऊंगा। और नाउ इन दोनों बिट्स को जब मैंने एक सिंबल्स में कन्वर्ट कर दिया, तो इस सिंबल्स को हम यूनिकली कोड करके भेजेंगे। समझ में आई बात? देखो अभी मान लो कि तुम बिट्स के हिसाब से भेज रहे थे, तो 0 0 1 भेज रहे थे। अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि 2 बिट्स को एक साथ क्लब कर रहा हूँ, एक सिंबल बना रहा हूँ। और इस सिंबल को मैं एक स्कीम, कोडिंग स्कीम से कोड करके भेज रहा हूँ, है ना, एक यूनिकली भेज रहा हूँ। तो अभी जो हम सिंबल्स, मान लो मुझे 8 सिंबल्स को भेजने थे, 8 बिट्स को भेजने थे, 8 बिट्स को हमने दो दो के सिंबल्स बना दिए। तो जहां हम 8 बिट का ट्रांसमिशन करेंगे, वहां अभी हमें कितना 4 सिंबल्स का ट्रांसमिशन करना पड़ेगा, है ना। 2 2 बिट्स को हम क्लब कर दे रहे हैं, तो 8 बिट्स को 4 सिंबल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो 4 सिंबल्स का ट्रांसमिशन करेंगे। और 4 सिंबल्स का ट्रांसमिशन करेंगे तो यूनिकली हमको 4 डिफरेंट आइडेंटिटीज चाहिए इन सिंबल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। ओके। तो इससे हमारा क्या होगा कि ट्रांसमिशन ऑलवेज बिजी नहीं होगा, और हमारा बैंडविड्थ भी कम यूज होगा। ठीक है। ये डिफरेंस हम देखेंगे, लेकिन अभी यहाँ आपको समझ में आ गया कि डिफरेंस बिटवीन बिट रेट और सिंबल रेट क्या है, वो समझ में आ गया। सिंबल रेट को आगे हम लोग और समझेंगे। तो बिट रेट और सिंबल रेट का डिफरेंस समझ में आ गया। तो यहाँ पर पीसीएम में क्या है कि देर इज नो सिंबल्स, सिंगल बिट बाय बिट ट्रांसमिशन हो रहा है, इसीलिए हम बोलते हैं बिट रेट इज इक्वल टू सिंबल रेट। ओके। इफ दैट इज डन, सो नाउ लेट अस मूव टू क्वांटाइजेशन एरर। क्वांटाइजेशन एरर में वी हैव सीन, देखो मेनी ऑफ यू गाइस हैव मतलब सेड कि सर हिंदी और इंग्लिश दोनों में बोला कीजिए, बट फ्लो फ्लो में मतलब जो आ रहा है वही मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, मैं मतलब इंटेंशनली ऐसा कुछ नहीं है मेरे। तो क्वांटाइजेशन एरर की बात किया तो क्वांटाइजेशन एरर क्या होता है? हमने ऊपर देखा ±Δ/2, यही क्वांटाइजेशन एरर है ना। तो टू तो हमारा कांस्टेंट है, उसको छोड़ दो। तो क्वांटाइजेशन एरर किस पे डिपेंड कर रहा है भाई? इट डिपेंड कर रहा है डेल्टा। डेल्टा क्या है? स्टेप साइज। और स्टेप साइज क्या है? वी पीक टू पीक अपॉन 2 raised to the power n, वेर एन क्या है? एन बिट इनकोडर, कितने बिट का इनकोडर है उसी से एन है। ये सारी कहानी हमने ऊपर देख देख लिया है ना। अब देखो, जो नॉइस थी उसको तो हम इजिली ओवरकम कर पा रहे हैं, कैसे? रिपीटिव रीजनरेटर से, है ना। अभी रीजनरेटर हमको रीजनरेट करके हमको ओरिजिनल सिग्नल दे रहा है। लेकिन क्वांटाइजेशन एरर, एक तो क्वांटाइजेशन क्या है? इरिवर्सिबल है। दूसरा क्या है कि क्वांटाइजेशन एरर किस पे डिपेंड कर रहा है भाई? वी पीक टू पीक अपॉन 2 raised to the power n पे। तो मतलब कि क्वांटाइजेशन को हमको कितना, क्वांटाइजेशन एरर को हमको एज लो एज पॉसिबल रखना है, यही हमारा टारगेट है। तो कैसे कर सकते हैं भाई? इसकी दो वैल्यूज है। या तो आप देखो 2 raised to the power n, या तो इसको आप बहुत बढ़ा दो, n की वैल्यू जितना बढ़ा दोगे एक्सपोनेंशियली ये बढ़ेगा, नीचे वाला चीज बढ़ जाएगा। डिनोमिनेटर जब बढ़ेगा तो ऑब्वियसली बात है क्वांटाइजेशन एरर बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा, तो n को इंक्रीज कर दो। दूसरा क्या कर सकते हो भाई क्वांटाइजेशन एरर डिक्रीज करने के लिए? वी पीक टू पीक को आप डिक्रीज कर दो, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वी टू पीक कम होगा तो क्वांटाइजेशन एरर कम होगा। अब ये चीज तो हम कर नहीं पाएंगे, एन को बढ़ा नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा बैंडविड्थ डिपेंड करता है एनएफएस पे, यानी कि आरबी इज इक्वल टू एनएफएस होता है, हमने ऊपर देखा, सिंपल मतलब फॉर रेक्टेंगुलर पल्स।
अदरवाइज इट इज नथिंग बट एन एफ एस इंटू वन प्लस अल्फा बाई टू, मतलब दोनों ही केस पे एन पे डिपेंड कर रहा है बैंडविड्थ। और दूसरा हमने देखा प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर भी एन के साथ साथ इंक्रीज होता है, तो एन को इंक्रीज करके हम क्वांटाइजेशन एरर डिक्रीज करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ दो नए प्रॉब्लम्स भी हमारे साथ आ जाएंगे। पहला ये हो जाएगा कि बैंडविड्थ बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होगा, दूसरा प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर, तो इसको तो छोड़ दो, ये नहीं करेंगे। दूसरा ये है कि वी पिक टू पिक हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। तो देखो, इसके लिए हमारे पास क्या कर सकते हैं, अभी वी पिक टू पिक को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझ लो ये है हमारा मैसेज सिग्नल, और इसका रेंज ऐसा आ रहा है 5, 4.9, 4.8, 4.6। ये तो मैं फिर भी आपको बहुत डिफरेंट दे रहा हूँ, अगर एक्चुअल में सैंपल वैल्यू देखोगे तो आपका 4.8 और 4.7 के बीच में बहुत सारे सैंपल्स होंगे। 4.799, 4 पॉइंट ऐसे करके सैंपल्स होंगे ना, मैं सिंप्लिसिटी के लिए ऐसे ले रहा हूँ, 4.5 ऐसे करके सैंपल्स होंगे। तो अगर आप क्वांटाइजेशन से पहले ये सैंपल्स को किसी तरीके से आप इसको रिड्यूस कर दो, ठीक है, इसको रिड्यूस कर दो किसी तरीके से क्वांटाइजेशन को, इस सैंपल्स को, यानी कि पहला 4 हो गया, दूसरा 4.9 है, तीसरा 4.8 है, 4.7 है, 4.6 है, किसी तरीके से आप इसकी वोल्टेज एम्पलीट्यूड को रिड्यूस कर दो, है ना। तो आप ये कह सकते हैं कि भाई अगर ये रिड्यूस हो जाएगा, तो 5 वोल्ट ही अगर हम रिड्यूस कर दे 2 वोल्ट पे, तो ऑब्वियस सी बात है क्वांटाइजेशन के जो पीक लेवल होंगे वो 2 वोल्ट मैक्सिमम होगा पॉजिटिव में। और इस -5 को अगर हम रिड्यूस करके 1 वोल्ट कर दें, तो ये भी 1 वोल्ट से 2 वोल्ट के बीच में ही हमारा वी पीक टू पीक लाई करेगा, यानी कि टोटल सैंपल वैल्यू इसी दो रेंज के बीच में लाई करेगा, तो वी पीक टू पीक रिड्यूस हो जाएगा। अब ये कैसे कर सकते हैं, देखो, ये हम कर सकते हैं एक बहुत ही मतलब इजी टेक्निक से, जिसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल कोडिंग। इसमें क्या करेंगे हम, हर एक सैंपल को उसके प्रीवियस सैंपल से माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर हमें कितना मिलेगा, 0.1, है ना। यहाँ पर भी हमें 0.1, यहाँ पर भी 0.1, ऐसे करके हमें 0.1 सैंपल मिलेंगे अगर हमने 0.11 के इंटरवल पे लिया है। ठीक है, तो इससे देखो, अगर ये 4.9 की जगह में मान लो 4.8 होता या 4.6 होता, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें डिफरेंट सैंपल्स मिलते हैं, 0.1, 0.2, 0.4, मे बी 0.05 एज वेल, इस तरीके के हमें सैंपल्स मिलते हैं। तो अभी जो सैंपल्स के एम्पलीट्यूड 5 वोल्ट थे, वो सैंपल्स के एम्पलीट्यूड कितने हो गए, 0.1 वोल्ट। जिसके कुछ और थे उसके डिफरेंसेस वैल्यू 0.2 है, 0.05 ऐसे हो गए। तो इसी टेक्निक को हम कहते हैं डीपीसीएम, डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन। ठीक है, इसी टेक्निक को हम बोलते हैं डीपीसीएम, डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन। ठीक है, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, क्वांटाइजेशन एरर को डिक्रीज कर सकते हैं। जस्ट रिमेंबर कि डीपीसीएम में हम क्या करेंगे, डीपीसीएम के अंदर हम क्वांटाइजेशन एरर को हम रिड्यूस कर लेंगे, ऑब्वियस सी बात है। आप बोलोगे कि सर ये सैंपल तो ओरिजिनल सैंपल तो आपका 5 था, अब यहाँ पर आप 0.2 के हो, ऐसा कैसे, फिर रीजनरेट कैसे करेंगे। रीजनरेट करने के टाइम पे आप ये जनरेट कर लोगे, इसके बाद आपको वहां पर एक अनदर सर्किट यूज करना पड़ेगा, जहां पर वो प्रीवियस सैंपल से इस सैंपल को ऐड करेगा, ऐड करते जाएगा, यहाँ सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, वहां उसका रिवर्स करना है बस। ठीक है, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, वहां छोड़ दो। यहाँ पर समझो कि डीपीसीएम के अंदर हम पहला अचीव कर रहे हैं, क्वांटाइजेशन एरर को रिड्यूस कर दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन क्या हमें इसके साथ कोई और बेनिफिट मिल रहा है बैंडविड्थ में, नहीं, क्यों, एन के साथ हमारा कोई रिलेशन ही नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर में नहीं, एन के साथ कोई रिलेशन नहीं है, हम एन को टच नहीं कर रहे हैं, तो इन दोनों में हमें कोई एडवांटेज नहीं मिल रहा है, ना ही बैंडविड्थ का कोई एडवांटेज मिल रहा है, ना ही प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर का कोई एडवांटेज मिल रहा है, हमें बस क्वांटाइजेशन एरर का एडवांटेज मिल रहा है। ठीक है, इफ दैट इज अंडरस्टूड, तो मैंने ऊपर बताया था आपको कि हमारे पास एक तो एन है और एक वी पीक टू पीक है, तो वी पीक टू पीक को टेकल करके हमने एक नया टेक्निक बना दिया, डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन। एवरीथिंग इज सेम, ओनली द डिफरेंस ऑफ द सैंपल इज टेकन। अगर हम एन को टैकल करें, तो भाई एन को हम टैकल नहीं कर सकते, लेकिन इन केस मान लो एन को हम 1 कर देते हैं, भाई रिड्यूस कर देते हैं। अरे एन को अगर हम रिड्यूस करेंगे, तो भाई क्वांटाइजेशन एरर क्या होगा, वी पिक टू पिक अपॉन 2 रेज़ टू द पावर एन, हमें तो एन को बढ़ाना था जिसके क्वांटाइजेशन एरर बढ़ बढ़ जाए, घट जाए, आई मीन। अगर आप एन को घटा देगे तो घटाने से क्या होगा, क्वांटाइजेशन एरर बढ़ जाएगा, तो हमें तो ये करना ही नहीं था, लेकिन आपने बोला कि सर एन को 1 रख देंगे। देखो, एक ऐसी टेक्निक है जहां पर हम एन की वैल्यू को 1 रख देते हैं, अगर हम एन की वैल्यू को 1 रख देंगे, और उस टेक्निक का नाम है डेल्टा मॉड्यूलेशन। डेल्टा मॉड्यूलेशन, अब बोलोगे सर डेल्टा मॉड्यूलेशन में क्वांटाइजेशन एरर तो बहुत ही ज्यादा होगा, नहीं। डेल्टा मॉड्यूलेशन एक स्पेशल टेक्निक है जहां पर क्वांटाइजेशन एरर का कोई कंसेप्ट ही नहीं है, यहाँ पर स्लोप का कंसेप्ट है, क्वांटाइजेशन लेवल्स है ही नहीं, यहाँ पर देर इज नो कंसेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन लेवल्स, हेंस क्वांटाइजेशन एरर यहाँ पर आता नहीं है। ये डिफरेंट टाइप की टेक्निक है जहां पर हम स्लोप्स की बात करते हैं, ठीक है।
तो डेल्टा मॉड्यूलेशन के एडवांटेज क्या हुआ? डेल्टा मॉड्यूलेशन का पहला एडवांटेज ये हो गया कि भाई एन की वैल्यू हमने 1 अचीव कर ली। जब एन की वैल्यू 1 अचीव कर ली तो हमारा बैंडविड्थ भी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो गया, और हमारा जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर है वो भी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो गया। और एन की वैल्यू 1 होने पे हमारा क्या हो गया कि बिट रेट इज इक्वल टू सैंपल रेट। भाई एन की वैल्यू 1 हुई होगी, एक ही बिट है हमारे पास, तो उसको आप बिट रेट बोलिए या सैंपल रेट बोलिए या पल्स रेट बोलिए, ऑल इज सेम। दिस इज अबाउट डेल्टा मॉड्यूलेशन। सो डेल्टा मॉड्यूलेशन में क्वांटाइजेशन लेवल्स नहीं बात होती है, स्लोप की बात होती है। तो स्लोप के अंदर क्या होगा, स्लोप की बात करेंगे अगर हम लोग, तो बस स्लोप के अंदर आप दो टेक्निक याद कीजिए कि अगर कोई मैसेज एम्प्टी है तो आप डी बाई डी टी, स्लोप का मतलब यही होता है डी बाई डी टी, डिफरेंशिएशन ऑफ एम्प्टी कर लो, इससे आपका एक ऑप्टिमम एक स्लोप निकलेगा, स्लोप बाई डी टी एस। ठीक है, इसको आपको कंपेयर करना है ऑप्टिमम स्लोप बाई डी टी एस। ऑप्टिमम स्लोप किसी भी, ये बेसिकली स्लोप की क्यों बात कर रहा है, मैं ये बात कर रहा हूँ रिसीवर के लिए, किसी भी रिसीवर के लिए ऑप्टिमम डेल्टा दिया रहेगा, डेल्टा ऑप्टिमम दिया रहेगा। ठीक है, और मैसेज सिग्नल से आप डी बाई डी टी ऑफ एम टी करके डेल्टा अपॉन टी एस निकाल सकते हो। अब यू हैव टू कंपेयर, रिसीवर एंड पे यू हैव टू कंपेयर कि जो स्लोप आपका है वो डेल्टा ऑप्टिमम से कैसा है। ठीक है, दैट यू हैव टू कंपेयर। So there is two possibilities. Either it will be greater. If it is greater, then you write G for greater, G for granular. Then there would be granular error. Just remember, if it is lesser, then there is slope overload error. तो अगर आपका slope is less than the greater than the optimum slope, then we have a granular error. If the slope is less than the optimum slope, then what we have is the slope overload error. So these two errors are possible in delta modulation during receiving। डेल्टा मॉड्यूलेशन में ये दोनों एरर पॉसिबल है। सो गाइज, यहाँ पर हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं अपना पीसीएम और उसके रिलेटेड सारे चीजें। न्यूमेरिकल्स की जहां तक बात है, आई विल ट्राई टू टेक वन सेपरेट क्लास ऑन विच हम लोग रिसीवर पे न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे और पीसीएम पे न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। आई नो न्यूमेरिकल वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर डिस्कशन, जो कि आप पढ़े उसका कंसेप्ट स्ट्रांग होगा। और इसमें दो तीन बातें वेरी इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूँ आपको, वेरी इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ। देखो, कुछ कुछ फॉर्मूलाज ऐसे हैं जो मतलब केवल न्यूमेरिकल स्पेसिफिक है, वो मैं आपको एंड में लिख के दे दूंगा कि ये भाई ये फॉर्मूलाज हैं और इस टाइप के क्वेश्चंस ऐसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए इस पे एक और वीडियोस आएगी डिजिटल कम्युनिकेशन के ऊपर, जहां हम एएसके पीएसके एफएसके यूज करेंगे और उसके बाद इसको रैप अप करेंगे विथ वन न्यूमेरिकल क्लास। ठीक है, बहुत सारे लोग मतलब पूछते रहते हैं कि सर ये वो अपलोड करोगे, कब करोगे, दिस करोगे। देखो भाई, ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट बना दी है मैंने, ठीक है, डीसीआईओ टेक के नाम से 2025 यूट्यूब पे अवेलेबल है, पब्लिक है। उस लिस्ट के अंदर मैंने डीसीआईयू से रिलेटेड सारे वीडियोस डाल दिए हैं। उसके अंदर आप सब देखो, सिलेबस का ब्रेकडाउन भी बता दिया मैंने कि क्या क्या टॉपिक को पढ़ना चाहिए हमको पहले, और उसी के हिसाब से फिर आप लोगों का रिक्वेस्ट आया कि सर कवर कर दो कवर कर दो, तो फिर मैंने स्टार्ट किया हर एक टॉपिक को। तो ऐसा नहीं है कि मैं केवल इसी के टॉपिक्स को ही करूंगा, मैं कंप्यूटर साइंस के भी टॉपिक को करूंगा। इनफैक्ट मैंने एक और वीडियो अपलोड किया जहां पर मैंने पूरा स्केड्यूल डिसाइड किया है कि कब कैसे टॉपिक्स को हम लोग पढ़ेंगे, कैसे हम लोग वीडियोस के अपलोड करूंगा मैं, और कैसे कवर करेंगे, वो एक पूरा डिटेल वीडियो है। तो उसके अकॉर्डिंगली ही अपलोड होगी, कोई आगे कोई पीछे नहीं होगी। एंड आई विल लाइक ट्राई टू स्टिक टू इट। हो सकता है कि जो जो टारगेट लिया है उससे हम 1 या 2 दिन डिले हो जाएं, दैट इज पॉसिबिलिटीज, बिकॉज आपको मालूम है कि रूटीन बनाना और फॉलो करना वेरी डिफिकल्ट। तो फिर भी वी विल ट्राई टू फिनिश इट विद इन द टाइम लिमिट। सो प्लीज डोंट मतलब ऐसा मत करो बार बार कि सर क्या अपलोड होगा, दिस अपलोड होगा। प्लीज सी दैट इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन, 5-10 मिनट का ही वीडियो है, यू कैन सी टू दैट, और आपका कंफ्यूजन दूर होगा। ठीक है ना? और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेरी हो आपका, तो काइंडली आप कमेंट कर दीजिए। देखिए, आप कमेंट करते हैं तो लाइक आई अंडरस्टैंड कि भाई आपको, आपने देखा आपको ये प्रॉब्लम हो रहा है, और आई पर्सनली रिप्लाई टू ऑल द कमेंट्स। ठीक है, कोई भी किसी भी चीज के रिलेटेड कमेंट्स हो, आप कमेंट कीजिए मुझे कि सर ये समझ में नहीं आया, इस टॉपिक को थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको पहले से फिर से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है ना? सो दिस वुड बी ऑल टुडे फॉर दिस क्लास। सो इंशाल्लाह विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट क्लास। चलो, बाय।